All the listeners of Health Education Lecture Series. I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. And I'm here at 7021 Village Parkway, Dublin, California, 94568. My phone number is 408 687 1899. Email address is 7021 email address is homeomedicine, HOMEOMEDICINE @yahoo.com. Anytime when you are tired of any treatments at any age for any disease, you can call me for the consultancy for the second opinion of your disease or for a homeopathic approach to your health. There is no consultation fee, and you can discuss your disease. And if ever you are interested, yes, you can take homeopathic treatments based on my 51 years of medical practice, out of which I was teaching in medical colleges for about 26 years. And since I'm here in 1996, since then, I'm teaching my community, my public, on radio, on TV, on YouTube, Facebook medias, and also on the newspapers. Approximately every week in newspapers, my lectures are published, and regarding the health education, and on all these routine medias, YouTube, Facebook, uh, and Sabrang radio station, Pravas radio station, Punjab radio, all these, they are delivering my health education lectures in series regularly, so that my community should be aware of the functioning, formation of the body, functioning of the body, and if ever it becomes sick, what are the causes behind that sickness and how we can cure that. It's a general rule that if we know the causes, if we know the causes of anything for any problems, it means half of the portion of our further action has been solved. Further action means we have to cure that, we have to treat that. So, further action is that we have to cure the diseases. And if we know the causes, it means half work has been done. As if we will withdraw those causes, if we are able to withdraw those causes, ultimately the reversal will start on the same day. Reversal will start at the same movement, basically. So in this way, we must know about all these things, and then I'm delivering these lectures how the life is created from life, and since then how it was developing, how the body was structured, formed, and even during the formations there are some deficiencies remains, though they are because of some reasons. They are because of some reasons, because every reaction is because of some any action. There is action, that's why there is a reaction. If there is abnormality, means there is some action which was not suitable, which was not required, or which was beyond the limits. Under these conditions, we are discussing about the life from life, and we are at the point that a child is in mother's womb, developing inside the mother's womb, and during this phase, some of the abnormalities in its normal physiological phenomena remains remains inside the body, and the body is structurally deformed in the beginning. And at that time, in the previous years, we were not able to detect those things previously before it comes out from mother's womb. But nowadays, we are able to detect all these things
And most of the abnormalities we can detect during mother of Bub's life. And as we are discussing about the vertebral problems, we can judge them, we can diagnose them within the 15th week of pregnancy, means 3.5 months approximately. Within a 3.5 month of pregnancy, and the first 2 weeks, they are considered as the part of the pregnancy, but they are not. At that time, nothing had happened in concern to the continuation of this pregnancy. Everything was normal, nothing. But after 2 weeks, there is a time when the ovum meets the sperm. It means these 2 weeks we can discount. So it means when the sperm and ovum meets, from that very point, the time is only 3 months, 12 weeks. So it means altogether from the last day of first day of last menstruations, after 3.5 months, we are able to calculate, we are able to diagnose many of the problems which a child is suffering at that time in the beginning of its formations, and also that beginning formation deformities will show up in a large scale in his body when it will come up from the mother's womb, and that will be known as congenital abnormalities. And discussing about those things, congenital abnormalities, we have already decided these congenital abnormalities into two groups. One group we said is physiological abnormalities. Physiological abnormalities are those abnormalities which, in due course, automatically are recovered, just like we have already told you for an oval in the heart. There are many more other things, but if something is not recovered in a due time, just like the fontanelles, and they are not normals, then we need to take some steps, which is known as a treatment. And that treatment has two parts. One part is the management. First of all, diagnosis, to detect the actual cause, actual problem. Then, to detect the causes behind that actual problem which is existing at this time. After that, after that, if we know the causes, and if we know that these causes are removable and we can remove those causes, it's possible, then we can cure them at the same point, and ultimately the further development of the child in mother's womb will be okay, will be a normal. But if it is not recovered, under those conditions, the body starts continuing developing in the same abnormal pattern, and whatever is in a minute abnormalities, in a minute portion of the body structures, it shows in a large portion of the body. It becomes a bigger problem. It shows up, in other words, we can say a microscopic problem show up itself as a macroscope. Microscopic problem shows up after the birth as a macroscopic, means first of all it was not visible to the open eyes, but now it is visible to the open eyes. Just like in our last lecture, we were discussing about the abnormalities of the vertebral column and basically the fetal abnormalities. And when we say the fetal, it means still the child is in the mother's womb, is developing. It has not completed 280 days. It has not come up from the mother's womb, means that there is no delivery at the time. After that, After that, we have discussed one by one the problems occurring during intrauterine life. And we are now able to detect all these things
even before a child is born, at a different course, at a different time of the pregnancy, just like the heart problems and also this one, the vertebral problems. We are able to hydrocephalus, we are able to detect all these things, fetal abnormalities, in the 15th week of intrauterine pregnancies. And yesterday we were discussing about the abnormalities of the vertebral column. And the vertebral column abnormalities, mostly it comes under a big heading of Down syndrome. Down syndrome covers a large variety of diseases. Many of the things come because Down syndrome means many of the things are not developing as their course is, as their normal routine is, and they should be recovered. It means they are not recovered according to the normal pattern. So all those things comes under this fetal abnormalities, okay, of Down syndromes. And we have discussed yesterday the scoliosis. We have discussed the spondylitis and meningioma, and the other names were given to the meningioma. Okay, and also we have discussed the abnormalities of the vertebral nerves inside the neural canal, and inside the neural canal, the vertebral column and nerves may be attached to one or the other side of the neural canal, which also causes problem for the normal functioning of the certain vertebral nerves. They cannot perform their normal functions, and that function is shown by those organs which are controlled by those nerves. Just like, if that's known as teething nerves. And if this problem occurs in the thoracic area, definitely the organs which are controlled by the thoracic nerves, they will not function normally. And from dysfunctioning of respiratory organs, from dysfunctioning of the heart problems, and from dysfunctioning of the mediastinal organs, all that we can figure it out, that the normal problem lies in the neural canal. And in this way, the scoliosis, spondylitis, spina bifida, all these things we have already discussed, that these are the problems which generally occurs in the vertebral column. And in a small size, microscopic size, they starts in the beginning of the fetal life. And now when it grows up to 3.5 months, we are able to detect them. Means they comes larger at the level that our microscopic eyes can see that. And when we are able, just like I told you previously, if we know the causes and we see the causes, then we are able to remove that. And ultimately, it was not a normal practice. It was a serious practice. Child, fetus is in mother's womb and is a tiny body. And that tiny body is very difficult to take care of in the mother's womb. But now our surgeons, our physicians, our antenatal physicians, they are competent to do these surgeries even when the fetus is in the mother's womb. And under those conditions, two things are mainly required for the treatment of these things. First of all, psychological approach. You have to prepare the mother for that what will happen to do. Again, you have close up all the abdominal muscles. You have close up all the uterine muscles. Then you have to reach up to the fetus after opening the amniotic sac as well. And then you will reach to the embryo,
or then the fetus, and then you will be able to detect by the microscopic eyes that where the defect is lying, and you can correct that at the same time. But for this long procedure, but for this deep intelligence, we need to prepare the mother as well as the family for this stress which she will go through for this surgery or all that. Then, after that, if a fetus has been delivered and is not able to be detected or diagnosed when it was in the mother's womb, at that conditions it becomes very difficult that, first of all, for the management. Treatment treatment remains the same depending on the conditions where the meningioma is, means that tumor, that cyst or that tumor, okay, spina bifida or meningioma, where it is, how much it is, how many nerves it is involving, means how big area of the vertebral column is damaged, and that is allowing the inner neural membrane to bulge out along with its fluid, and also sometimes the nerves. When the nerves are bulging out in these spina bifida or the meningiomas, it's more serious conditions because the nerves are unable to perform their normal functions because they are bent down, they are diverted, and has gone up from the vertebral columns. The second conditions, after the figuring out that where it is and what is the position of that one. The second condition is what type of spina bifida or meningiomas are, whether the bones are separated or there is a bulging out of the neural canal membrane outside, or the nerves are bulging out along with that one. Also, the fluid, that is CSF, is also bulging out in that meningiomas, or only the mass to some extent, or only the disc to some extent. All these things will figure out the intensity of the disease, intensity of the conditions, and according to the management is also changed. It's a very serious condition. It is very serious condition if the bones are not formed normally, the vertebras by which this vertebral column is formed. If the vertebras are not formed normally, and the neural membrane, the neural canal as a whole, you can say, is bulging out in between the vertebras, as the in between vertebras or the disc has not formed or has not completed controlled closure to the vertebral columns. And the treatment or the management depends upon the conditions, so that proper arrangement may be made. If the bones, only small part of the portion is bulging out, it can be pressed down, or a slit, or a belt, or a plaster can help, so that ultimately this bone may develop with the new arrangements. And then the vertebral column will be complete, and the angioma, meningioma, as well as the spina bifida will be corrected. But it is only in case if this spina bifida or the tumor bulging out from the vertebral neural canal is in a small quantity. But if the bone is not formed, in between, you can say one vertebra is missing, is not formed normally. And it's a big hole by which the neural membrane is bulging out along with its CSF as well as the neural nerves. And there is no support to the membrane. It's a very serious condition.
It is very serious condition. Under these conditions, if it is not detected during the intrauterine life, it's a very serious condition even during the labor time, because a big pressure is exerted during the delivery time, and it is possible that neural membrane may rupture because of the pressure, and there may be a stillbirth of the child. Very serious condition if it has not been detected during the uterine life and has not been corrected during the intrauterine life, and the child is passing through the normal labor. And the normal labor, because under conditions, if we know that there is a meningioma or the spina bifida or the abnormalities of the vertebral column in a developing fetus inside mother's valves, we can suggest beforehand, the doctors can suggest beforehand that their normal labor is not possible, that normal labor is serious conditions. Sometimes the child may not survive because the rupture of the neural membrane may bring out the CSF out, and everything will be paralyzed. Nerves will not work accordingly, and everything will be paralyzed. This is serious conditions. And under those conditions, if it is detected early during the pregnancy, before the delivery periods, then there are now available surgeries. Doctors are competent to do that, to stitch those things previously and manage that. And also to manage that the cesarean deliveries, to bring it out, so that the child will not, or the vertebral column especially, will not bear that stress of the labor. But in case we are unable to detect that because of the lack of medical facilities in the areas, then, and the child is suffering from the meningioma or the vertebral column defects, any types of vertebral column defects, that may be teething and nerves, that may be meningiomas, that may be spina bifidas, and that may be scoliosis. There are different type of defects which a child develops during the mother's womb. And now we are discussing that if it is not detected before the labor onset, at that conditions, we have to take special care of that one, that it should not rupture during the stress pains of the labor. And God bless if the child comes out without any rupture of that spina bifida or any meningioma, the tumor that is coming up, that is a cystic type of, because it has fluid. When any cyst, any tumor contains the liquid portion in it, that is known as a cyst. And when this liquid portion is constricted over there and the liquid is squeezed, becomes hard, and there's no softness, under those conditions, it is known as tumors. So if it's a tumor, sometimes there are some chances that it will not rupture. But if it's a membrane, if it's only neural membrane is coming up from the vertebral gap, under those conditions, it's serious conditions during the labor periods. And the suggestions before that is that it should go under cesarean sections. And just see, the child has born now, and it's still surviving. It is not ruptured. The neural membrane has not ruptured, but we see that the vertebral abnormality is there. The bones are not formed, the vertebrae are not formed fully, and it is not contracting to each other. And there is a gap in between the vertebrae, which is bulging out the neural membrane along with its fluid and nerves as well. Under those conditions, it becomes a serious condition even the first very hours after the birth, because that child cannot lie on her back, on his back, because if it will
rub his back, or his back is rubbed by the bed inside, it may rupture this membrane, simple a membrane. Though this membrane is made up of connective tissue, they are hard to rupture, but even then, it is possible that it may rupture, and it may rupture it, it may bring up any serious consequences at the same time, because there is a limited quantity of CSF, cerebrospinal fluid. There is a limited quantity of that fluid which remains in the brain as well as in the neural canal and the vertebral column. And as I told you, it is about 125 to 150 milliliters is a normal. And if more than one third liquid is lost, everything will be paralyzed. Brain will be paralyzed, and all. If the brain is paralyzed, these nerves are paralyzed, and the nerves are paralyzed, and the organs are paralyzed. So, this type of conditions may occur. So now, if a child is not having that much serious conditions, but even then, child is having spina bifida, child is having a meningioma, as I have told you, at any reason, mostly it occurs in the cervical area, mostly it occurs in the lumbar area, in the back side, where we put the belt of our pant in the back side. These are the most important sites to represent the tumors of the vertebral columns, or most abnormalities in the formation of the vertebral columns, so that it can erupt type of tumors, the inner tumors. So in this way, if a child is born under those conditions, what will be the condition of that child? Because at the time of birth, we measure the length, height of the child, we measure the weight of the child, we check the urinary organs of the child, we check the anus of the child, many other various things we inspect at the beginning of the child when it is delivered. So under those conditions, we see that the child's shoulders are not equal. They are unequal at level. They are unequal at level. If there be any abnormality of the vertebral columns and the vertebral nerves are involved in that one, and if the nerves are involved on the right side of shoulder will be a higher, and the left side of shoulder will be lower positions. In this way, this is known as the teething of the neural nerves. And neural nerves can stack up to the front portion of the neural canal, back portion of the neural canal, because of lack of the CSF. Because the nerves are floating in the neural canal in between this fluid. And the normal quantity, I have told you about that one. But if the quantity has leaked out under some circumstances, then the nerves will stack up to any side: anterior side, that is towards the abdomen; posterior side towards the back; right side or left side. And sometimes this these nerves, when stuck up to that side, the organs of the other sides are not at level, are not functioning even. So this is what the sign and symptom immediately will proceed. Suppose if these sacral nerves are not working, definitely the urinary organs, he will not be able to pass urine. Definitely, if the sacral nerves are not working, coccygeal nerves are not working, then he will not pass the stool in a normal periods. So these are the signs and symptoms which will come within 2 hours of the birth, because we check the child, newborn child, within 2 hours for all the normal activities which should happen within 2 hours of the birth. In this way, so we have detected the shoulder will not be at a equal level if there is some problems in the vertebral column, because vertebral column is the axis.
And then after that, one scapula. If the shoulder is not at the level, it shows the one scapula, the back side, the shoulder blade, we consider it. That shoulder blade is tilted out, it is projected. One other is pressed down, and the one is projected backward. So this type of deformities shows in the back of the chest. We can see that. And also, if there is a spina bifida that I consider at the level of the lumbosacral area, then the pelvic disproportions, the pelvic uneven means the waist, our hip area, it will not be in a equal. If the child is lying and we see that hip, one side it will be projected high, the other side will be projected low. It's a normal season. And also if the one hip is raised upward, the one hip is on the downside, though they are connected with the sacral portion in the backside, but the one leg, the height from the you can say the anterior posterior iliac spine, the highest portion where you put the belt, the highest portion of the bone of the hip, that is known as the iliac spine. Okay, or from iliac spine to your feet, to your thumb polish, that's known as hallucis. Basically the feet, big toe is known as hallucis. So up to hallucis, if you measure out all these things, both side, it will be unequal. So all these abnormalities, even in a newborn child, we can see that it is not equal. So if it's not equal, it shows something's wrong. Something's wrong. Maybe in a minor condition, and we at that time do not see any tumor, we do not see any angioma on the backside of that, but it shows that some abnormality is there. As I told you about the abnormalities, scoliosis, and the turning of the this lordosis, and means curve of the vertebral column, facing front, facing backside cob, and facing right side or left side. All these are the positions where a weak vertebral column can show, turn up in its position, and it is not straight in the middle of the back, if we see that. So all these things are there that we have to take care of that. And where the treatment is concerned, I told you about, first of all, psychological treatment is necessary for the parents. Child do not know about your language at that time. It is necessary for the mother especially, and to prepare her psychologically, that you have born this type of child, and now these are the problems, and we have to do this and that. Whatever the treatment policy you have to, you should have declare her, and also to make her capable to bear all this stress. And after that, splint, plastering, all these things should be taken care of temporarily, but ultimately when it is because at this that stage we know bones are in its developing stage. And if something was deficient in the diet of the mother, which was supplied to the child in the mother's verbs, and now we know that whatever formula feeding, whatever diet we, just like the folic acid and iodine and all that, which is a must to be given to the mother, as well as now to the child, because he is now disconnected from the mother. So in this way, his milk or his whatever food we give him should contain all these folic acids and all these things, so that next development of the bones may become normal without surgery. If it is in a normal condition, then splint will cover, then plastering may cover. All these things are known as management at that time, depending upon the condition and also depending upon the site where it is. Okay, and how wide, how many bones of the vertebrae are damaged and are not fully developed to cover the gap of that one.
So it depends upon that one. So what you can do that one. So this is known as bracing and plastering and physical therapy after that to manage just like all the muscles of the back. You know, there are many more muscles as trapeziums, subscapularis, and there are many more muscles which control the position of the back and vertebral column. And for that, physical therapy later on is advised. So all these things are done for this thing. So today I will close this chapter, and tomorrow we will discuss another abnormality of the children's, newborn children's, which develops in the mother's womb, that is autism and ADHD. Autism and ADHD. There are many more children nowadays. This type of condition is increasing in number every year, increasing number every year. Now we have some reasons, we have some causes, we know that we can remove those causes, but even then this condition is increasing. And tomorrow I will tell you the sign and symptoms of those conditions, autism and also of the ADHD. Both conditions are somewhat similar. Both conditions are somewhat similar to each other, but there is a little difference. I will describe tomorrow. Today this English lecture time is over. We will come to the Hindi lecture now, at this time. हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इन हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज में बहुत लंबे समय से, सालों से रेगुलर तौर पे मैं पता नहीं कितनी बार ये मैं रिपीट कर चुका हूँ। बहुत सी बातें मैं बहुत रिपीट कर चुका हूँ कई बार, और मेरा पर्पज़ ये है कि मेरी कम्युनिटी को इस शरीर की बनतर कैसे बनती है, और बनतर बनते बनते माँ के पेट में भी बहुत सी दुश्वारियाँ आ जाती हैं, बहुत सी कमियाँ पेशियाँ आ जाती हैं। वो कौन सी कमियाँ पेशियाँ हैं और कैसे पैदा होती हैं, इन सब के लिए जानकारी मैं आप सब लोगों को मुहैया कर रहा हूँ इन प्रोग्रामों में, ताकि आप इस बात के लिए जानकार हों। और जिन चीज़ों के बारे में हम पहले जानते हैं, अवगत हैं इस बात के लिए, और हमें ये पता है कि इनके पीछे कारण क्या-क्या हैं, तो डेफ़िनिटली हम उसकी पेशबंदी करेंगे। हम उसके लिए पहले प्रबंध करेंगे। सो जितनी भी कमी पेशियाँ माँ के पेट में बच्चे में डेवलप होती हैं, उन सब के लिए अब हमें बहुत कुछ ज्ञात हो गया, बहुत कुछ हमारी जानकारी में है कि ये चीज़ें इस तरह पैदा हो सकती हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें जो है वो जेनेटिकली हैं, जीन्स के तौर से आती है। मैंने आपको बताया था कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स of mother, 23 pairs of chromosomes of male sperm. When they meet, there is only one couple, means one couple of XX in the females and XY in the males. They take part in the further formation of the fetus, further development of the life from life. And out of these two, when they fuse, ultimately when they fuse together, they forms only X or Y or XX. If the newborn child is going to be developing as a female, it's XX. And if the newborn child is going to be developing as a male child, it is XY. And out of these two, one gene has hundreds of chromosomes. One gene has hundreds of chromosomes. Sorry, I'm still going to English. It's a Hindi period. So एक जीन में वो जो माँ और बाप का आपस में मिला, और अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसका जो आपस में फ्यूजन हुआ है वो एक्स एक्स का हुआ है। डोमिनेटिंग क्या है? एक्स एक्स है। और अगर मेल चाइल्ड आगे होने वाला है तो उसमें एक्स वाई का फ्यूजन हुआ है और वाई डोमिनेटिंग है। और फिर हमने ये बताया
कि एक जीन्स में बाकी सारे बॉडी के जीन्स होते हैं, जैसे रूटीन में बिक ईंटें होती हैं किसी मकान को बनाने के लिए, उस तरह होती हैं। लेकिन करैक्टर को प्रिज़र्व करने के लिए, असली उसकी बनतर को प्रिज़र्व करने के लिए जहाँ पर गुण फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जैसे नक्शा नहीं होता, हम सिटी से लेकर आते हैं कि ये नक्शा, ये घर हमने बनाना है और उसमें हर चीज़ डिटेल होती है कि रसोई कहाँ होगी, लिविंग रूम कहाँ होगा, टॉयलेट्स कहाँ, वगैरह-वगैरह। इस तरह वो सिर्फ़ एक जोड़ा होता है, जिसमें ये कैरेक्टर प्रिज़र्व होता है। और इनकी लड़ाई आगे चलकर, मैंने वैसे बहुत से पीछे लेक्चर किए हैं, इनकी लड़ाई ऐसा ही नहीं है कि हम ये कह दें कि भई यहाँ पर फैसला हो गया, यहाँ पर फैसला हो गया कि लड़की होगी कि लड़का होगा। अगर एक्स डोमिनेट कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो लड़की होगी, और एक्स वाई डोमिनेट कर दे तो लड़का होगा। और हम इसको 100% नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि आगे आने वाले समय में ये लड़ाई भी चलती रहती है। और मेरे जो पीछे के लेक्चर थे, वो जब भी समय आएगा तो फिर मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, जब आपने देखा होगा कि 10-12 साल की लड़की थी, वो लड़का हो गया, और 10-12 साल का लड़का था, वो लड़की हो गई। चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि ये जो फाइट थी इन बिटवीन एक्स एंड वाई, वो अभी जारी थी, वो अभी रुकी नहीं थी। उनके करैक्टर आपस में फाइट कर रहे थे, और वो करैक्टर की जो फाइट होती है, वो हार्मोनल बेस पे होती है। और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन की आपस में लड़ाई होती है। और इसके बेस पर आगे कई, एक या नहीं, कई बार कई बार ये चेंज सेक्स की होती रहती है। तो बात मैं आज की ये कर रहा हूँ कि ये जो जीन्स होते हैं ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हुए, एक क्रोमोसोम में सैकड़ों जीन्स हैं, और हर एक जीन्स का अपना-अपना एक करैक्टर है, और अपनी-अपनी एक डिफ़ॉर्मिटी है। ये अगर नॉर्मल है, तो करैक्टर कहेंगे उसको, अगर एबनॉर्मल है, तो डिफ़ॉर्मिटीज़ कहेंगे। अगर वो नॉर्मल हुआ, तो आगे आने वाला जनरेशन, बच्चा जो भी बने, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर लेकर पैदा होगा। अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, एक एक जीन जो है वो डील करता है मेमोरी को, एक जीन जो है वो डील करता है विजन्स को, एक जीन जो है, अलग अलग वो जीन्स हैं, स्वभाव को, फंक्शनिंग को, सभी चीज को वो डील कर रहे हैं। और जिस तरह के जीन्स में कोई डिफेक्ट बेसिकली आ रहा है, इसीलिए इसको हम जेनेटिकली बोलते हैं। जेनेटिकली ऐसा हो सकता है कि इसको हमने ट्राइसोमी कहा था, ट्राइसोमी, कि अगर माँ बाप की तरफ से ये जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, तो उसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं। और उस ट्राइसोमी में हमारे बस का रोग नहीं है, हम उसको मैनेज तो कर सकते हैं। जो हो गया है, उसको मैनेज तो कर सकते हैं। अगर बहुत वाइड रेंज की, क्योंकि अभी हम हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हम लोग प्रेगनेंसी के 15 वीक में, यानी साढ़े 3 महीने के अंदर-अंदर ये डिटेक्ट करने के काबिल हो गए हैं कि इसमें बच्चा अगर डेवलप करेगा, तो उसमें ये एब्नॉर्मैलिटी होंगी, और उसके लिए फिज़िकली हम एब्डोमेन चेक भी करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत से सिम्पटम्स मिल जाते हैं कि जो पैदा होने वाला बच्चा है, माँ के पेट में नॉर्मल डेवलप नहीं हो रहा है। या उसके बाद आजकल हमारे पास सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, और टोमोग्राफी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनसे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। जो ट्राइसोमी की बात मैंने पहले कर दी थी कि ये जो जीन्स हैं, अगर इनकी डबल कॉपी हो जाए, मान लीजिए हमने कहा कि औरत में एक्स एक्स होता है, और उसमें एक्स 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 हो जाए, तो हमने कहा आदमी में एक्स वाई होता है, उसमें मान लीजिए एक्स या वाई डबल कॉपी हो गई, तो वो जो डबल कॉपी जब दूसरे साइड से मिलेगी, तो उसकी फिर कॉपी बनेगी। इनकी फिर कॉपी, ज़ेरॉक्स कॉपी बनती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह हमारे सेल की डिवीज़न होती है, और अब ये आगे-आगे बनता है। तो मतलब जो पहली कॉपी में ही कोई डिफेक्ट आएगा, तो फिर सभी में आएगा ना। और वो जो सभी में आएगा, तो ऑटोमैटिकली जो बनने वाली बॉडी होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी। उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा, और वो जो स्ट्रक्चरल फ़र्क आएँगे ना, उस सभी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को हम एक टर्म में बांध देते हैं, डाउन सिंड्रोम में।
और डाउन सिंड्रोम में हमने ये कहा कि ये वो सब डेफिशिएंसीज़ हैं नव जन्मे बच्चे के शरीर में जो हम अभी देखते हैं। और अब हम माँ के पेट में भी देखने के काबिल हो गए हैं कि वो इस तरह की डेफिशिएंसीज़ हो सकती। और वैसे पहले ये था कि बच्चा पैदा होता था, उसके बाद हम देखते थे। जैसे मैंने हार्ट की आपको बात बताई कि फोरामेन ओवल होता है, लेकिन फोरामेन ओवल को तो हम सभी लोग जानते हैं कि भई ये एक फिजियोलॉजिकल टाइप की है। फिजियोलॉजिकल के टाइप की कमी-पेशी उसको हम बोलते हैं, जो अपने आप रूटीन में आई है और अपने आप रूटीन में ठीक भी हो जाएगी। और जो नहीं ठीक होने वाली उसको हम पैथोलॉजी को बोलते हैं। तो जितनी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन इस तरह हो जाती हैं ट्राइसोमी के कारण, मीन्स किसी जीन्स की डबल कॉपी जो पेरेंट्स से आ रही है। और इसकी बात मैंने ये भी आपको कहा था कि ऐसा भी नहीं संभव है कि भाई माँ और बाप में ट्राइसोमी है किसी में, लेकिन ज़रूरी नहीं उनके सभी बच्चे जो हैं वो आगे ट्राइसोमी को रिप्रेज़ेंट करेंगे। किसी एक बच्चे में हो गया या 2 में हो गया या किसी में भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है जो माँ-बाप अभी बनने जा रहे हैं उनमें से ट्राइसोमी लेटेंट स्टेज में था लेकिन वो रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा नए नए जन्म वाले बच्चे में। क्योंकि हर एक जीन जो है उसका अपना-अपना करैक्टर है। अगर उसमें आने वाले जीन्स में कोई उसका पुराना करैक्टर नहीं होया, ट्राइसोमी वाली बात लेटेंट स्टेज में थी, कुछ नहीं हुआ, तो उस तरह का जो बच्चा है वो नॉर्मल भी पैदा होते हैं। ऐसा भी होता है। तो हम बात कर रहे थे कि इस डाउन सिंड्रोम में ऑटिज़्म होता है, इसमें जो है ब्रेन के डिफेक्ट होते हैं जिसको हाइड्रोसेफलस मैंने बोला था, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आप सब लोगों को दे दी। उसके बाद रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट हैं और रीढ़ की हड्डी के जो डिफेक्ट हैं वो भी मैं आपको ये बताता चला आ रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी में क्या-क्या एक तो डिफेक्ट ये हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी आगे को झुकी है। जैसे-जैसे हमारी तोंद बाहर निकलती है ना पीछे-पीछे अगर आप देखें बैक में तो आपकी रीढ़ की हड्डी अंदर को धँस जाती है, कर्व बना देती है और उसको एंटीरियर कर्व बोलते हैं। सामने वाली तरफ में और ब कर्व जो है बैक साइड में हमें दिखाई देता है और अगर ड इससे उल्ट हो तो पीछे को झुक जाते ही लोग कुब्बे हो जाते हैं। बूढ़ी उम्र में जाते जाए ना तो वो कुब निकल आता है तो झुक कर चलते हैं और वो कुब ऐसे हो जाता है। वो तो उम्र के हिसाब से हो जाता है ना और बगैर उम्र के हिसाब से अगर ऐसा होगा तो फिर तो बीमारी है ना। और तोंद बड़ी हुई है, हमें पता ही है कारण है कि उसको खिंच पड़ रही ये बत मैंने आप सब लोगों को बताई थी बात कि भाई अ, अगर एक बोरी में थोड़ा वज़न है और उस बोरी को आप एक दीवार के ऊपर कील टाँगा हुआ है उसमें आप बाँध दें उसको। तो जो बोरी का वज़न है, वो कहाँ पड़ेगा? वो उस कील के ऊपर पड़ेगा ना, कील में खींच पड़ेगी ना। इसी तरह ही ये जो हमारी आंतड़ियाँ हैं ना, पेट का जो जितना भी दारो-मदार है हमारा, ये पूरे का पूरा एक गिलाफ में, एक बोरी में जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, उस पेरिटोनियम के गिलाफ में लपेट कर पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ बँधा हुआ और पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ बँधा हुआ तो अब पेट जितना भी बढ़ेगा, जितना वज़न इसमें बढ़ेगा ऑटोमेटिकली खिंच कहाँ होगी? टेंशन कहाँ बनेगा? रीढ़ की हड्डी में बनेगा और जितना-जितना पेट आगे बढ़ता है, उतना रीढ़ की हड्डी में आप देखिएगा तो पीछे से कर्व बनना शुरू हो जाता है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? नवजन्मे बच्चे की। अब उसकी तो तोंद नहीं ना बढ़ी हुई। नवजन्मे बच्चे में अगर ऐसा डिफेक्ट हो, कर्व हो, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। ठीक है? और इसको हम बीमारी के तौर पे लेते हैं और अगर कहीं हड्डी पूरी नहीं बनी हुई हड्डी जो वर्टिब्रल कॉलम की बात मैंने आपको बताई थी कि 33 अलग-अलग वर्टिब्रास बनते हैं और फिर आपस में जुड़ते हैं। उनके जोड़ वाली जगह में एक डिस्क होती है और इन सभी के बीच में एक टनल बनती है, एक गुफ़ा बनती है, एक कैनाल बन जाती है, जो सीधी ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। और ब्रेन में और इसमें आने-जाने के लिए एक ऐसा लिक्विड है, जो नर्व को फैसिलिटेट करता है, उसको घूमने-फिरने में हिलने-जुलने में वो उसको फैसिलिटेट करता है पानी और वो पानी की बात भी मैंने आपको कही थी। लेकिन हम वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं कि स्कोलियोसिस उसको बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी आगे को ज़्यादा झुक गई है, रीढ़ की हड्डी पीछे को झुक गई है, दाहिने या बाएँ को झुक गई है। और ये इतना ही नहीं, अंदर का जो ल्यूमन है, अंदर की गोलाई है, जो कैनाल बनी हुई है, उसमें जो नर्व जा रही हैं,
वो नर्व भी बेचारी अगर पानी कम हो गया या पानी किसी तरफ संगना हो गया, उस हालात में किसी एक साइड में स्टक कर दें, उसको टीथिंग बोलते हैं। वो टीथिंग वाली बात भी हो सकती है। और ये जब से बच्चा पैदा होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, तब से लेकर हो सकती है। और अब हमारे सामने आया है, तो उसके डिफेक्ट हमें दिखाई देंगे कि जिस तरफ में वो टिल्टिंग होगी, दूसरी तरफ के जो अंग हैं, क्योंकि ये बात भी मैंने आपको को जब याद आ जाती है बात, तो फिर सामने मुझे करनी पड़ती है। ब्रेन में ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। 12 जोड़े नर्व्स के निकलते हैं और 12 जोड़े नर्व्स के आपस में क्रॉस फंक्शन करते हैं। क्रॉस फंक्शन क्या है कि दाहिने साइड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं, वो बाईं तरफ के पूरे अंगों को कंट्रोल करती हैं और बाईं तरफ से निकलने वाले नर्व जो हैं, वो दाहिने साइड के अंगों को कंट्रोल करती हैं। लेकिन पास तो ब्रेन से पीछे को जो हमारा फोरामन मैग्नम है, उसके अंदर से रीढ़ की हड्डी के अंदर जाते हैं। और अगर पानी कम या ज़्यादा हुआ, वो जो सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो अगर पानी कम हुआ, तो उस हालात में किसी न किसी साइड में तो वो स्टक कर जाएँगे ना। और जिस तरफ स्टक कर जाएँगे, उनकी लेंथ तो लिमिटेड है ना। और इसकी वजह से उनका जो फंक्शन है वो हर्ट होगा, वो फंक्शन हम बाहर अंगों पे देखते हैं, कि आपने देखा होगा किसी का पाँव टेढ़ा है, किसी का कान टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है, किसी का नाक चपटा है, चौड़ा हुआ हुआ है, किसी की आँखें टेढ़ी हैं, सीक्वेंट है। इस तरह बहुत से डिफेक्ट शरीर के तौर पे हम जो देखते हैं ना, क्योंकि वो नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं, उनका फंक्शन भी और उनका जो स्ट्रक्चर भी आगे फॉर्मेशन का है, सभी चीज़ को सेंसेशन एंड फंक्शन दोनों चीज़ें वो नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं और नहीं हो रहा है उसके अंदर के डिफेक्ट का। तो हम कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहली बात हुई रीढ़ की हड्डी की बनतर में डिफेक्ट हुआ। उसको हमने बोला या तो मेनिंजियोमा हो सकता है कि खुत्ती में पीछे बैक साइड में एक ट्यूमर सा उभर जाता है और न्यूरल कैनाल में जो भरा हुआ पानी है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पूरा बल्ज आउट बाहर को हो रहा है। खुत्ती में, क्योंकि जहाँ पर गैप ज़्यादा होता है ना, मैंने आपको बोला था कि रीढ़ की हड्डी जैसे ब्रेन के साथ खोपड़ी के साथ जुड़ती है ना, वहाँ पर एक होल है, उसको फोरामन मैग्नम बोलते हैं और ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर ऐसे हो जाती है जैसे ट्रैक्टर और ट्राली एक दूसरे के साथ हुकअप करते हैं ना, अगर आपने देखी होगी हुकअप करते हैं तो वो जैसे वो गुल्ला उसका उसमें फँसता है ना, इस तरह का वो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसकी उसको बोलते हैं एटलस। एटलस वर्टिब्रा जो है, वो उसमें फँसता है, लेकिन अगर उसकी बनतर नॉर्मल ना हुई, अगर उससे कुछ लीकेज होना शुरू हो गया, तो फिर खुत्ती में ऑक्सीपिट के एरिये में बैक साइड में एक ट्यूमर सा उभर जाता है बाहर। उसको मेनिंजियोमा कहते हैं। और इसी तरह ही ये ट्यूमर जो पीछे बैक साइड में जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं, हिप के ऊपर वाले पासे और जो बिल्कुल वो लंबो-सैक्रल एरिया कहलाता है। ये नीचे सैक्रल, ऊपर लंबर वर्टेब्रास हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा गैप होता है और उस जगह भी ये कई बार ट्यूमर उभर जाता है। इसको हम स्पिना बाइफिडा बोलते हैं। इसी तरह ही जो अंदर के डिफेक्ट हैं, नर्व्स के हैं, बाहर के डिफेक्ट हैं, रीढ़ की हड्डी में। और रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट हैं कि वो उसकी बनतर नॉर्मल नहीं है और उसमें कोई हड्डी पूरी नहीं बनी है, गैप रह गया है और गैप से कई बार इतना बड़ा गैप हो जाता है कि उसमें जो वो अंदर का ल्यूमन है, अंदर का जो मेम्ब्रेन है, न्यूरल मेम्ब्रेन, वो बाहर को बल्ज आउट हो जाता है, तो उसके साथ नर्व्स भी बल्ज आउट हो जाती हैं, पानी भी बल्ज आउट हो जाता है और वो सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो इस सब की जो डिटेल थी, वो मैंने इन सब प्रोग्रामों में आपके साथ साझी करते आ रहा हूँ और उसके बाद आम तौर पे जो देखने वाली निशानियाँ बनती वो तो बाकी बाकी तो जो पेट में देख रहे हैं हम वो तो माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं ना। उससे हमें पता चल जाता है कि ये आगे छोटा बिंदु है, ये आगे जाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। चाँद से जाकर वो धरती का वो ऊपर से लेते हैं ना पिक्चर लेते हैं तो एक बिंदु सा दिखाई देता है, छोटा-सा, छोटी-सी धरती है सारी और कितनी बड़ी धरती है। इसी तरह ही जब हम माँ के पेट में बच्चे की शनाख्त करते हैं, तो अब हमारे पास डिवाइसेज़ आ गई हैं कि हम चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर उसको फ़िज़िकल तौर पे वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि उसके शोल्डर जो हैं वो बराबर नहीं हैं। एक शोल्डर नीचे है, एक ऊँचा है।
और इसी तरह ही हम देखते हैं उसका नाक है, वो नॉर्मल पोज़ीशन में नहीं है। हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है, वो उसकी नॉर्मल नहीं है। या हम देखते हैं कि उसकी एक बाजू ऊँचा है, एक बाजू नीचे है। हम देखते हैं कि उसकी बैक में एक शोल्डर ब्लेड जो है, वो उभरा हुआ है, एक शोल्डर ब्लेड नीचे को धँसा हुआ है। हम देखते हैं कि उसकी टाँग एज़ ए होल टाँग ही कह लो, क्योंकि जो सबसे ऊँची हड्डी है उसका नाम इलियम है। इलियम के सबसे ऊपर का जो टॉप पोर्शन हमें दिखाई देता है ना, हाथ लगाओ तो पेट में दिखाई देता है, उसको इलियक ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। वो इलियक ट्यूबरोसिटी से लेकर हम टाँग का मेज़रमेंट करते हैं कि कितनी है, और इलियक ट्यूबरोसिटी से लेकर हम अंगूठे, पैर के अंगूठे तक का नाप करते हैं, इसी तरह दूसरे का नाप करते हैं। और अगर इसमें स्पिना बाइफिदा है, अगर रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम है, तो लेंथ नॉर्मल नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हमें साबित करती हैं कि अगर कोई विज़िबल साइन नहीं भी है, तो ये मेज़रमेंट में आ रहा है कि इसमें ऐसा कुछ साइन है, कोई ऐसी कमी-पेशी है। और अगर इस तरह की कमी-पेशी आ ही जाती है, तो फिर उसके लिए करना क्या है? पहली तो बात में ये चलता आ रहा था कि ये माँ-बाप से हो सकती है, उसका अब हम कुछ नहीं कर सकते ना। उसको हम बदल नहीं सकते, उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं एक्वायर्ड भी होती हैं, और वो जो एक्वायर्ड होती हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारी कमी-पेशी के कारण, हमारी अनजान-पुने के कारण, हमारी डेफ़िशिएंसी कि हम वो जो करना चाहिए था हमें वो नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये कोई प्रॉब्लम्स या डेफ़िशिएंसी रह गई, वो बनकर पूरी नहीं हुई। इसलिए ये एक्वायर्ड वाली जो बात है, इसको तो हम माँ के पेट में भी दुरुस्त करने योग हो गए हैं। लेकिन जो ट्राइसोमी जो पेरेंट्स से आने वाली बात थी, इस तरह रीढ़ की हड्डी के डिफेक्टों वाली बात थी, और उसको भी हम वहाँ पेट में ठीक करने के काबिल हो गए हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा ना, बच्चों के दाँत सही करने वाले इनविजुअलाइज़ेशन करते हैं ना, तो वो बोलते हैं नहीं, बच्चे को 12-13 साल का हो जाने दीजिए। अब छोटे बच्चे को करेंगे क्योंकि उसका मैंडिबल जबाड़ा भी बढ़ेगा, दाँत भी बढ़ने हैं, तो अभी इसको करेंगे तो फिर आने वाले समय में वो फिर टिल्टिंग हो जाएगी। इसलिए अब जो ट्राइसोमी की वजह से बच्चे के बाई बर्थ जीन्स में जो डिफेक्ट आ रहा है, उसको हम करेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, जो हमारी कमी-पेशी के कारण रह गई हैं, उसकी शिनाख्त भी हमने कर दी इन प्रोग्रामों में कि भाई कमी-पेशी क्यों रह जाती है? क्योंकि जो थायरॉइड हार्मोन होता है ना हमारा, उसको एक्टिवेट तो पिट्यूटरी ही करता है। थायरॉइड हार्मोन का एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम कैल्सिफेरोल, जिसका काम है जहाँ-जहाँ से भी उसको कैल्शियम मिले, लेना, कैल्शियम लेकर जहाँ इसको चाहिए सप्लाई करना। टैक्स तो सभी का जाता ही है। अब ये सेंटर की मर्ज़ी के पंजाब का हिस्सा उसको दे या ना दे, दूसरे को हिस्सा दे देवे, अलग दे दे, तो वो कैल्सिफ़िकेशन वाली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो दूसरे हार्मोन पे डिपेंड करती है। लेकिन उसका काम है कि जहाँ-जहाँ से उसको कैल्शियम मिले वो ले ले और हड्डियों की बनतर पूरी हो जाए। और अब इसका सिस्टम उसको समझाने की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि थायरॉइड को नॉर्मल काम करते रहने के लिए उसकी खुराक उसको मिलेगी तभी करेगा। और उसकी खुराक क्या है भई? आयोडीन। अगर हमारी खुराक में माँ को जो दी जा रही है उसमें खुराक में आयोडीन कम हुआ, तो उसको उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा। फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा, तो वो जो हम दूध जो उसको खुराक जा रही है माँ के से खून जा रहा है, उसमें से जितना कैल्शियम उसको लेना चाहिए वो ले नहीं पाएगा, और ले नहीं पाएगा तो हड्डियाँ पूरी बनेंगी नहीं, गैप रह जाएगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो तो ले रहा है, वो तो ठीक काम कर रहा है। कैल्शियम जो खुराक हमारी जा रही है आंतड़ियों में जो जैसे भी उससे जा रहा है उसको उसका पूरा डिटेल मैंने आपको दी है कि बच्चे के शरीर में कैसे-कैसे होता है, खुराक का विसर्जन कैसे-कैसे उसको डाइजेस्ट होती है। तो ख़ैर ऐसा अगर हुआ तो उस हालात में बच्चे की खुराक में जो कैल्शियम था, वो नॉर्मल तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो जो एड्रेनालिन ग्लैंड का कोर्टिसोल हार्मोन है, ये उस पर डिपेंड करता है। और ये कैसे डिफेक्टिव हो जाता है, उसमें क्या नुक्स पड़ जाता है? अगर माँ टेंशन में रहे, माँ का माहौल टेंशन में रहे, गम, डर, गुस्सा, फ़िक्र,
परेशानी, ये सभी चीज़ें, रोना, ये सभी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा एड्रेनालिन ग्लैंड का हार्मोन। और अगर उस हिसाब से उस हिसाब से माँ बनने वाली माँ का माहौल मानसिक तौर पे सही ना हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका एड्रेनालिन ग्लैंड का वो हार्मोन जो है वो नॉर्मल काम नहीं करेगा। काम उसका क्या था कि जो वो कैल्शियम आया उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करना और उसे नॉर्मल हड्डियाँ बनाना। यानी साधारण बोली में मैं आप सब लोगों को समझा रहा हूँ कि साधारण तौर पे होता क्या है, एक का काम था कि पूरा लेना, क्योंकि 2 चीज़ें हैं हाइपोथायरॉयडिज़्म और हाइपरथायरॉयडिज़्म। इसमें बहुत से लेक्चर मैंने इससे पहले भी किए हैं, जब फिर टाइम आएगा तो मैं करूँगा। तो उनका काम ये है कि शरीर की बनतर को अंजाम देना या हड्डियों की बनतर को अंजाम देना। कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे हो जाते हैं, बिल्कुल दुबले-पतले होते हैं और बहुत लंबे हो जाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज़्म के कारण। और हाइपरथायरॉयडिज़्म के कारण क्या होता है, मोटे-मोटे अब मेक्सिके आपने देखे होंगे ना, जो काले बहुत मोटे-मोटे होते हैं ना, इस तरह के लोग हो जाते हैं। सो ये उसका फ़ंक्शन है, उसके नॉर्मल फ़ंक्शन के लिए चाहिए क्या? आयोडीन। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए? फ़ोलिक एसिड उसको चाहिए। अगर फ़ोलिक एसिड की नॉर्मल बनतर हुई, तो जो चीज़ जहाँ लगनी है, वो वहाँ नॉर्मल लगेगी और माँ की खुराक में ये सब चीज़ें हुई, तो नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट होगी, एक बात। दूसरी बात, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़िम्मेवार कौन है? एड्रेनालिन ग्लैंड। एड्रेनालिन ग्लैंड का हार्मोन, कॉर्टिसोल, और वो तभी सही रहेगा, अगर माँ का माहौल सही रहा तो। बातें छोटी-छोटी हैं, लेकिन इसका डिफेक्ट, इसका जो असर है, दूर रस निकलता है, वो जो पैदा होने वाला बच्चा है, भुगतना उसको पड़ता है। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डेफिशिएंसीज़। हमने अटेन की है, हमारी गलती से, हमारी कमी-पेशी, ये माँ-बाप से नहीं आई, ट्राइसोमी वाली बात नहीं हुई। बात, माँ-बाप ठीक थे सब, उनमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं था, जो था भी तो वो लेटेंट स्टेज में था, वो एक्टिव नहीं था। लेकिन अब हमारी इस एनवायरनमेंट की गलती से, हमारी इस खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन की गलती से और माहौल की गलती से बच्चे को इतना बड़ा भुगतना पड़ सकता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही नॉर्मल ना बने। अगर पिलर हमारा सही नहीं रहा, तो आप अंदाज़ा लाएँ कि उस पे बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी? नहीं मजबूती आ सकेगी ना। तो इस तरह के बच्चे आप जमांदरू अपाहज के तौर पे भी आप देख सकते हैं। वज़न भारी होता है, न अंग पूरे नहीं होते, बड़े छोटे अंग होने शुरू हो जाते हैं। वो मैं पोलियो की बात नहीं कर रहा, पोलियो में कोई एक आध टाँग उसमें भी हो जाती है, लेकिन वो बाद की बात है। जो पैदा होता है बच्चा, उसकी बात नहीं है, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ, जो अभी पैदा हो गया है, जो जिसको हम पहले डिटेक्ट नहीं कर पाए, पहले हम ठीक नहीं कर पाए। और ठीक करने की बात तो मैंने आपको पहले बता दी इसके लिए, कि अभी ठीक करने के लिए इतना ज़्यादा प्रबंध हमारे पास आ गया है कि माँ के पेट में एंटीनेटल सर्जरी करके, एंटीनेटल मीन प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है, उस समय में हम उसकी सर्जरी करके तो उसको ठीक कर सकते हैं। माँ का पेट चीरेंगे, बच्चेदानी की मांसपेशियाँ चीरेंगी, उसके बाद अमनियोटिक फ्लूइड जो सैक है उसको चीरेंगे, उसके बाद बच्चे तक पहुँचेंगे, उसको डिफेक्ट को ठीक कर लेंगे। अब इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, पर अगर नहीं आई है और वो बच्चा ऐसे पैदा हो गया, तो फिर हमने उसका मैनेजमेंट आप लोगों को बता दिया कि मैनेज की कैसे करना है, कि भई अगर बहुत बड़ा है तो इमीडिएट सर्जरी की उसको भी ज़रूरत है। नहीं तो किसी भी वक़्त तो फट गया तो सीरियस कंडीशन हो सकती है। जन्म के समय वो जो लेबर का प्रेशर है, उससे भी वो फट सकता है और सीरियस कंडीशन उसी वक़्त भी हो सकती है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, डेड बर्थ भी हो सकता है। और अगर डिलीवरी हो ही गई है, तो उस हिसाब में भी हमें इसी तरह का प्रिकॉशन करना होगा कि पोज़ीशन क्या है, डिफ़ॉर्मिटी की पोज़ीशन क्या है? सिर में, थोरैक्स में और लंबर एरिया में, किस एरिया में है? और कितना साइज़ की है? और उसमें अकेला मेम्ब्रेन बाहर निकल रहा है या हड्डी ही पूरी नहीं बनी है, कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हमें उसको मैनेज करना होगा। स्मॉल चीज़ें हैं, ये पता है कि बच्चे की बोन तो डेवलप हो रही है, अब ही हम उसको वो चीज़ दें, जिससे उसकी हड्डियाँ नॉर्मल डेवलप हों, तो ऐसा हो सकता है छोटा-मोटा गैप कवर अप हो जाए। और अगर बड़ा गैप है, तो फिर उसके लिए हमें अभी से ही उसको सर्जरी से उसको ठीक करना होगा। छोटे को हम प्लास्टर करके, बेल्ट लगा के,
इस टेम्परेरी मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो स्कोलियोसिस है और जिसमें ये जो ट्यूमर बाहर निकल आया मेनिंजियोमा, इस हिसाब से स्पिना बाइफिडा फट सकता है। फट के किसी वक़्त भी सीरियस कंडीशन हो सकती है और जब पानी ही नहीं मोबिलर नहीं रहेगा गड्डी में तेल नहीं रहेगा, तो फिर इंजन जाम हो जाएगा, आप सब समझते हैं, एकदम सारा कुछ ऐसा हो सकता है। सो आज का ये हमारा समा समाप्त हो गया। कल हम फिर आपसे बात करेंगे जो डाउन सिंड्रोम में अभी एक कुछ बातें रहती हैं कहने वाली, कि ये डाउन सिंड्रोम जेनेटिक की बात मैंने अभी भी कर दी, रोज़ाना करता रहता हूँ कि जेनेटिक के अलावा अभी एक्वायर्ड टाइप की कंडीशनें जो हैं और उसमें ऑटिज़्म आ रहा है, उसमें एडीएचडी आ रहा है, जिसके आजकल बहुत सारे बच्चे हैं। अ पहले तो पता ही नहीं लगता कि लाडले हैं, हैं जी, लाडले हैं, शरारती हैं, मर्ज़ी से बात करते हैं, मर्ज़ी से ब बात सुनते हैं, मर्ज़ी है तो आवाज़ दे देंगे, मर्ज़ी है तो आवाज़ नहीं देंगे और हम सोचते हैं कि ये बच्चे की ऐसी तबीयत नहीं, ये प्रॉब्लम है। ये निशानियाँ हैं उस चीज़ की और उसकी डिस्क्रिप्शन हम कल आपके सामने रखेंगे कि ऑटिज़्म होता क्या है? एडीएचडी क्या होता है? दोनों में अंतर है कोई या एक ही चीज़ है या क्या अंतर है उसमें? और फिर उसके बाद उसका क्या किया जा सकता है? सो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग इन प्रोग्रामों को एन्जॉय कर रहे होंगे और इससे सीखने वाली बातें आप सब लोगों को मिली होंगी। क्योंकि अगर आप इस दौर में नहीं हो तो कम से कम आपकी आने वाली जनरेशन इस दौर में तो है ना। अगर आपके पास जान पहले क्या होता था गाँव में एक बुज़ुर्ग माता होती थी, कोई ना कोई और उसी से ही पूछते थे, कोई भी बात होती थी उससे पूछ लो भाई, हैं जी? तो वो अपने तजर्बे के हिसाब से जितना उसको पता होता था, बता देती थी। लेकिन उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता था। उसके पास कि क्यों, व्हाई, रीज़निंग कुछ नहीं होता था। अभी हमारे पास मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि हमारे पास रीज़निंग है उसकी। मुझे पता है कि हम ये कह रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? और जब हमें कारण का पता चल जाता है ना, तो बहुत सी चीज़ें 50% तो कवर हो जाती हैं। मुझे पता है कि आपके साथ मेरी लड़ाई क्या हुई है, कारण क्या है? और उस कारण का जब हमें पता चल गया तो राज़ीनामे के लिए आधा आधार तो तैयार हो गया ना। हम उस चीज़ को लेकर फैसले की घड़ी में पहुँच सकते हैं। ठीक इसी तरह ही बीमारियों के बारे में जब हम पता चल जाता है कि इसको पैदा करने के पीछे ये कहानी है, ये कॉज़ेटिव फैक्टर है और उसको दुरुस्त करने का हमारे पास क्या-क्या चांस, क्या-क्या तरीकाकार है, कितने हम नॉलेजेबल हैं कि इसको दुरुस्त कर सकें। माँ के पेट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो बाहर आके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और इस तरह की सभी चीज़ें जो हम अब जानते हैं, तो कल को हम ऑटिज़्म और ये एडीएचडी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। पंजाबी का प्रोग्राम क्योंकि कल रेडियो प्रवास के साथ होगा, सो इसलिए पंजाबी का प्रोग्राम आज हम छोड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पंजाबी समझते हैं, वो हिंदी भी समझ लेते हैं, जो हिंदी समझते हैं कुछ-कुछ पंजाबी भी समझ लेते हैं और मैं तो बातों को ज़्यादातर रिपीट करता रहता हूँ, ये ज़रूरी है। अभी हम लोग ये जान लें कि डिलीवरी के टाइम पर नहीं पहुँचे हैं। अभी माँ के पेट में ही बच्चों में रहेगी कमियों-पेशियों की बात कर रहे हैं। फिर हम डिलीवरी में पहुँचेंगे कि भाई डिलीवरी क्या है? इसका पर्पस क्या है? ये कैसे शुरू होती है? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों क्यों शुरू हुई होती है? ठीक-ठाक बच्चा माँ के पेट में था तो माँ पे पेट में रहता ना फिर, रह ही जाता। जी, लेकिन नहीं रहता ना, उसके पीछे क्या कारण होते हैं? वो लेबर पेन क्यों स्टार्ट हो जाती है? वो सब चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बाद में। पहले ये जो डेफिशिएंसीज़ हैं, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब हम आपको बता दें और फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा, तो फिर आगे चलेगा कि ओह! अब पैदा होने के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या-क्या बीमारियाँ आ सकती हैं, जिसके साथ इस नवजीवन को जूझना पड़ सकता है, उसकी बात एक-एक करके आपके साथ करते जाएँगे। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथिक कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाज़िर हूँ। 7021 विलेज पार्क वे, डबलिन, कैलिफ़ोर्निया 94568। मेरा फ़ोन नंबर 4086871899। ईमेल एड्रेस होम्यो मेडिसिन, HOMEO
medicine@yahoo.com। सो किसी भी वक़्त किसी बीमारी के बारे में आप समझना चाहें, ज़रूरी नहीं कि ये मैं बच्चों की बातें कर रहा हूँ या लिवर की बातें कर रहा हूँ तो शायद नहीं। सिर से लेकर पाँव तक किसी भी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जान सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी बीमारी का आप इलाज करवा रहे हो, तो वो इलाज नेचर के हिसाब से सही लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, आप कर सकते हैं। सो ऐसा अगर आपको लगे या होम्योपैथिक टाइप से आप ट्रीटमेंट ही करवाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच है होम्योपैथी की आप हमारी सेहत के लिए, अगर वो आप करवाना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं 408 687 1899।